छोटी सी जो है फीडबैक लेना चाह रही हूँ on that, which you have to only mention in the chat, and we are going to surely take it forward in the session while we will be having our discussion. The main जो on our agenda था, thank you Ms. Hayat for putting us live. तो जो लोग वहाँ से connect हो रहे हैं YouTube से, they should be moving here so that they can participate directly into the sharing thought activity, in which you will be telling me that what do you understand by the main. So course overview, which we spoke about, is the basics of performance management. I told you setting clear goals of performance evaluation and exploring essential terms and framework. इस पे हमने बात करनी है, इस पे जब हमने डिस्कशन करनी है तो हमें इतना सा आइडिया है कि हम बेसिकली अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंटेल्स क्या है, क्या होता है ये, और प्रोसीजर वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द गोल्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट and key components of exploring the essential elements which are part of. ये सब चीजें जो हैं इसमें हमने बात करनी है और इनको देखना। अच्छा, अब इसके ऊपर अप्रेजल से कैसे लिंक बनता है, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल वर्ड ये होता है ना, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक साइकिल है, लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल को परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है। आपने एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देना है, मुझे ज्यादा नहीं, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, सिर्फ एक एक आंसर, व्हाट इज परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं और देना है। परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? आई जस्ट नीड स्मॉल रिप्लाईज फ्रॉम यू। टेक Assalamu 5 minutes. alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम अरूज, हाउ यू Ma'am, डूइंग? sorry for interruption, but your voice is not clear. अच्छा, इज इट सो? एंड Yes. हाउ मेनी आर फेसिंग द सेम इशू? मोस्टली Ma'am, नहीं your आ रही Yes, voice आवाज? is ma'am. good. Yes, There is ma'am, not नहीं आ that रही। much issue, but the thing is that it is a bit stuttering. The only issue अच्छा, is that. That's why ओके, I let you डिस्टॉर्शन हो continue. रही है। गॉट इट। तो फिर एक Yeah, काम करते हैं, मैं रिज्वाइन कर लेती हूँ, है ना? sure, आई ma'am. थिंक ये फिर ठीक Sure, है। sure. लेट मी रीड। चले, इन द मीन वाइल क्वेश्चन को हम आज आप रीइंफोर्स करें जब तक मैं वो कर रही हूँ रिज्वाइन, Sure, ma'am. ताकि On टाइम it. सेव हो जाएगा। लोग आज रिप्लाई लिखते रहेंगे, परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन आप जरा दोबारा से रीड कर दें, मैं रिज्वाइन कर। Sure, ma'am. Okay, everyone, till the time ma'am is rejoining, kindly write down your thoughts in the chat that what do you think about the performance management, that uh, how it helps you in evaluating the candidates that you had. So please write down your thoughts on what do you know about the performance management till the time ma'am is coming. Okay, thank you.
It was taking time. It means कि network का issue है for sure. Am I audible enough? Yes, ma'am, you are. चलें शुक्र. ठीक है जी. Good. My screen is also visible to everyone. Yes, ma'am, it is. चलें ठीक है जी. Second. अच्छा, क्वेश्चन के रिप्लाईज आ रहे हैं. दैट्स रियली गुड. ठीक है, गोइंग गुड, ग्रेट, गोइंग ग्रेट. Take 5 minutes and just reply to these all. And those who are listening from the YouTube, आप भी यहाँ आ जाएं ताकि ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लें Zoom पे. And then we will be moving forward with more explanation on our topic of the day. Sure. This is very nice by all of you. बिल्कुल ठीक है. Absolutely correct. चले कर लें. बाकी सब लोग भी 1-2 मिनट और ले लें और सब लिख लें. बट किंसा ने बड़ा अच्छा रिस्पांस लिखा है. इकरा लियाकत, वेरी नाइसली डन. अरीबा, आपको अच्छा वो चाहिए, देख लें फॉर्म. आई थिंक शी इज आस्किंग फॉर द फॉर्म. मारिया, वेरी नाइस. और अफीफा, गुड. हारिस, वेरी नाइस. नेहा, वेरी नाइस. किंजा अजीज. अलिशबा इमान, गुड वन. अनीला, वेरी नाइस.
Saika, good one. Zishan, very nice. Arif, good. Kirat also. चले, I'm giving few more minutes. ईमान फातिमा, बहुत अच्छा, very good. चले ठीक है, एक दो सब लोग जो है वो अच्छा क्वेश्चन के लिए. Arif is asking for question. Arif, the question is that what is performance management? Performance क्या होती है? I'm just asking what is performance. I have written it for you again. What is performance? ठीक है जी. चलें अरीब, आप भी लिख लें आंसर. Good answers. All answers are very nicely been taken by you all. और बस एक मिनट और लेने प्लीज. और जो जिन लोग ने अभी नहीं किया ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें. कुत्सिया कार्य बड़ा अच्छा है. सुलेमान वेरी गुड. और अरूज वेरी नाइस. चलें जल्दी जल्दी लिखें आंसर अपने. आई एम वेटिंग फॉर अनदर 2 minutes. Naila, very nice. Good one. Very good. चलें जी. As far as I can understand, you have a clarity. We are moving forward with our topic for the day, so that you understand it in a better prospect that what actually we are talking about. तो आपकी बात बिल्कुल सबकी ठीक है. परफॉर्मेंस बेसिकली क्या होती है? कोई कोई भी काम जो कोई कर रहा होता है तो किस तरीके से उसको कर रहा है, उसको कैसे लेके चल रहा है, उसने काम का के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं. कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो दी जाती है. उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली उसने अपने जॉब रोल को किस हद तक परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म किया है, क्या वो बिल्कुल मीट कर रहा है अपने टारगेट्स को, या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे कहीं वो कम परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है. और कुछ जगहों के ऊपर तो माशाल्लाह इतना अच्छा भी इम्पैक्ट होता है कि पीपल डू ओवर परफॉर्म रादर देन अंडर परफॉर्मिंग. यानी उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है, बट वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वो सुपर अमेजिंग हो जाता है. ये सब सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली परफॉर्मेंस कहलाती हैं. लेकिन जब इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के इस कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको लिंक कर देते हैं, तो वो वाली जो अप्रोच होती है उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, साइकिल, प्रोसीजर, प्रोसेस एंड ऑल. परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक और तरीके से भी नेम किया जाता है. और वो जो नेम किया जाता है उसका नाम होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो
हम लेके चल रहे होते हैं, उस सिस्टम की एलोकेशन इस तरीके से होती है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो फॉलो करी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन। और जब वो फॉलो उसको करती है तो उसमें क्या करती है, वो बेसिकली किसी भी सेटअप में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उस पर्सपेक्टिव पे वो उसे, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो साइकिल का हिस्सा होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि ये एम्प्लॉय जो है वो क्या कर रहा है, और वो एम्प्लॉय जो है उसने कैसा परफॉर्म किया है, और कितना जो है उसका और जो उसके असाइन टास्क थे वो उसको उन्होंने उसने फुलफिल किया। ये तमाम चीजें जो हैं दीज फॉल इनटू दी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल। अब अप्रेज करना किसको कहते हैं? अप्रेज करना कहते हैं तारीफ करने को। ओवरऑल तारीफ जैसे आप किस तरह से कर रहे होते हैं, अप्रेजल उसी से निकला है। प्रेज है उसको एक्नॉलेज करना, मोटिवेशन उसकी उस एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशनल एस्पेक्ट को सामने रख के, ताकि जब वो परफॉर्मेंस जो उसकी है इवेल्युएट होती है। इवेल्युएशन उस अप्रेजल के जरिए इस तरीके से होती है कि आप जब किसी एक सिस्टम को अनाउंस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें फिर वन ऑन वन इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। वन ऑन वन इंटरव्यूज में बातचीत होती है, एम्प्लॉय से पूछते हैं कि आपको ये जॉब टास्क जो दिया गया था, जो आप आपने अप्लाई की थी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन था, आप सिलेक्शन हायरिंग के प्रोसेस से गुजरे, फिर आपको बताया गया कि ये काम आप ऐसे कर रहे हैं। उसी के दौरान आपकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बताया कि जी आपकी इवैल्यूएशंस होंगी डिफरेंट एरियाज पे। तो जब वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के इंटेल्स को कम्प्लीटली डिफाइन हम कर देते हैं, तो गोल्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के यही होते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात लेट सपोज करते हैं, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से क्वार्टरली मंथली कोई ना कोई गोल्स एक्सपेक्टेड होंगे कि वो कितनी प्रोडक्ट को सेल करेगा। अब आप लोगों में से सब लोग आई थिंक मोस्टली जो कस्टमर सर्विसेज के भी कोर्स में को अटेंड कर रहे हैं, तो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी वहाँ पे, माशाल्लाह इतना जबरदस्त तरीके से उसमें आप लोग इन्वॉल्व हैं। उस प्रोडक्ट के साथ आप उसे क्या करना है, सेल करना है। अब अगर एक डिपार्टमेंट में आप अपने, आपका एक डिपार्टमेंट है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो वहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं उस वक्त, तो वो परफॉर्मेंस है ना आपकी, जो काम है जो आपकी, तो उस जॉब की परफॉर्मेंस का ताल्लुक जो है, जो रेट करेंगे उसको, जब आप उसको असेस करेंगे, तो वो असेसमेंट या फिर उसकी इवैल्यूएशन ऐसे होगी कि प्रॉफिट कितना आया मंथली या क्वार्टरली या कुछ और तरीके से, क्या इफेक्ट उसका क्रिएट हुआ। की कंपोनेंट्स में एक्सप्लोर करना है एसेंशियल एलिमेंट्स को जो इन्वॉल्व है इस प्रोसेस। First process which we are going talking about is importance of appraisal, enhance performance. Once you conduct such appraisal meetings, so what actually happens in this performance management cycle? It enhances performance. Regular appraisals may identify strengths and weaknesses. अब रेगुलर अप्रेजल्स का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल जो है इसको इस तरीके से रख लिया जाता है कि ठीक है, हर 3 महीने के बाद आपको के साथ आपका मैनेजर बैठता है, वो आपको बताता है कि आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, आपने कैसा जो है आपका फीडबैक क्या है हमारा आपके बारे में कि आप कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ये वन वे साइकिल नहीं होता कि एक मैनेजर परफॉर्मेंस अप्रेजल करे इस तरीके से कि वो उसका फीडबैक लिखे और वो एचआर को भेज दे कि जी ये तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, या ओवर परफॉर्म भी उतना हार्ड करने में के लिए तो कोई ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली चीजें प्रोसेस होती हैं, बट अंडर परफॉर्मिंग टीम्स के लिए ये चीज कभी नहीं होती कि मैनेजर जो है वन साइडेड। हमेशा मीटिंग्स टू वे होंगी। जिसकी परफॉर्मेंस है उसके साथ आप बात करेंगे, बात इसलिए करेंगे कि आप उससे पूछेंगे कि अगर कोई आपको गैप नजर आ रहा है, लेट सपोज आपने उसको असाइनमेंट दिया कि आप पर डे 15 लीड्स लेके आए सेल्स की, इतनी सेल्स आप करें, कंप्लेन्स नहीं आनी चाहिए। ज्यादातर सेल्स के साथ इसको, और हर एक दुनिया का जो भी कोई कंपनी में आप काम करेंगे वहाँ सेल्स का पर्सपेक्टिव होगा या फिर कस्टमर सर्विसेज होंगी अगर वो प्रोडक्ट सेल में इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्ट। तो B2B जैसे जिसको कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अगर वो हैं जहाँ पर प्रोडक्ट की इसकी ये वाली सूरत हाल है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप जब उसके साथ रेगुलरली मीट करेंगे, बैठेंगे, तो वो इंटरव्यू जो आप उसका कर रहे होंगे, जो उसमें आप बातचीत करेंगे, तो वहाँ आप आइडेंटिफाई करते हैं उस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज वेल. So what ultimately happens when you have got a strength and your manager or the team who is interacting with you speaks to you highly about your strength, so you feel motivated. Yes, if there is a gap and that gap is termed as weakness, so no problem in that as well.
Always that weakness can be overcome through training or through mentorship or a bit of the guidance about that specific area which is limed in, which is, you can say that it is a gray area somehow, or is not that level of, you can say, performance is there which you were expecting. So in that scenario, it's very simple and easy that you will have a direct meeting with that person. You will tell that you see that you can perform better if you are, you can enhance your this skill. You are skilled, but if you can enhance. Quite a while ago, today only, I was having a session on public speaking, and I think many of you were part of that. So in that, we were just speaking about, and a very good point came up in that discussion, that some people do not have built-in skill of that. Inborn skill नहीं होता, हर कोई नहीं बात कर सकता. In that case क्या होगा? अगर उसने वैसा job role, तो वो एक challenge है उसके लिए ना. And challenges are not bad. That person can also speak, क्योंकि वो बोल तो सकता है ना. वो समझता है चीजों को, उसकी observation है, वो पढ़ सकता है. तो जो पढ़ सकता है वो बोल भी सकेगा ना, फिर अगर उसके पास वो skill है. So what happens in these meetings, that if that person has got shyness or hesitation in speaking in front of people, and those people, why it is important at the workplace, because the person has to address many things in front of at least 3 to 4, 5 to 6, 8 to 10, 12 to 20 people at one go. So in for that matter, he should be confident enough to talk. So if that weakness is prevailing in some employee or team, you can say the team member, other way around. So what the manager can do, can sit with that person and can suggest some trainings or can share some links through which he can learn that skill to be a confident speaker where he can talk. That will happen in that meeting, and automatically the performance will be enhanced, which will ultimately boost the morale. Recognizing achievements increases employee motivation. In the same meeting, when he's sitting with that person, so he will tell, the manager will tell that person, let's suppose the team member's name is Ali, so he's going to talk to Ali and tell, Ali, see, you have got such a good response over the emails and from the customer feedback when you are sending them kind of forms, and you are connecting with them over the write-up. So why don't you put some little effort to speak confidently directly with them? So Ali is going to say that, sir, I feel shy. I can't talk. I can't speak in front of multiple people. I don't know. I have this a kind of a feel that I will not be talking very confidently. Sir, please let me be in my job role. So the good manager is going to talk to him and will say, oh, come on, Ali, why are you thinking like that? You can speak well. Let me help you with it. Let's have a discussion on it every day for 20 minutes, whenever you are convenient, whenever it is okay for you to sit with me. I'll give you some tips how to be confident speaker. And to tell you one thing, Ali, when I started my career, I was just like you. I couldn't speak much, but see, now I'm talking to you. So this kind of a environment is going to actually boost the morale of that person, in which you are highlighting his strength and weaknesses also. Guides development. Appraisals provide a roadmap for personal and professional growth. Again, there is a plus point in performance appraisal management system, that it actually helps the employee to be more confident through having a guided map or the pathway through which he can develop his skills and go to the next position. It will be helpful for him for career development ultimately. Now, coming to importance of appraisal in detail, a performance during this whole cycle, the person who is appraised or is evaluated gets structured feedback on employee performance, identification of strengths and areas for improvement. Areas of improvement are the weaknesses. Career development, it supports career and training needs. Motivation and engagement is enhanced of that employee. And based of these 4 points,
the goal alignment is done. Aligns individual goals with organizational objectives. What is the purpose of that organization is then synced up with individuals' goals. So this is how the whole procedure works, which we term as performance management cycle or performance management, or we name it importance of appraisal. So this is how it works. Now, types. There are different types of appraisal. Self-appraisal. This is self-appraisal is it is exactly like the way we do the quizzes, in which you can see how many marks have you received. Then peer review, 2 to 3 colleagues, they talk about it. They tell you that you see what I feel that let's take the example of Ali. Ali, you are doing so good, but why don't you learn the way how to make PowerPoint presentations? Do it, come on, you are doing so well. Why don't you go for 1 or 2 classes of Excel? You know so many things, but practice it. You can learn it. Let me help you. I will give you the link of the course through which you can enhance your learning and practice it more. So this is how it works. Then managerial appraisals, supervisors evaluate employee performance. So supervisor is not the term supervisor, it is the manager who will appraise, who will tell the performance roadmap either, or the way where you are standing at that. There is 360-degree feedback. 360-degree feedback is actually that all the set of people in which peers, subordinates, and supervisors, they are giving the feedback. Let me just give me a second. I'm clearing all the drawings. Okay. Here we go. Now, 360-degree feedback, in which feedback from peers, subordinates, and supervisors is there. Managerial, directly evaluation by manager. Self-appraisal, employees assess their own performance. And peer review, feedback from colleagues at the same level. So there are 4 types of appraisals, which is 360, self, managerial, and peer review. Setting performance targets. Define clear objectives. In performance management, what we actually do is that the manager who is leading that person or team has to identify the objectives, should tell that what we want to establish. Establish specific measurable goals. Measurable goals are which are quantified. 60% improvement, 20% improvement, 40% leads, profit enhancement to 80%. So this is measurable. One can quantify that. Aligned with company vision, it should be meeting the vision of the company. Whatever the company has, the vision, the thought, so one should be very sure that it is targeted. Company is talking about one thing and you are doing something else, it's useless. So follow and focus the vision and mission of that organization. Involve stakeholders, engage team members in the target setting process. That is again very, very important to have that thing aligned and focused. Moving forward, target setting techniques. How will you set targets for the team? Isn't it very difficult? Because obviously, once you are going to set the targets, you have to ensure that what kind of targets are you going to set and which technique are you going to adopt, because it's not very easy to set the targets for the teams. So the first thing which you are going to focus, it has to be SMART goals. SMART means specific. Specific is to the point, measurable. You can quantify them, you can count, you can say percentage, how much it is. Achievable. It should not be the aims which one can never achieve. Do not set that kind of a goal for somebody. It's not realistic. It should be realistic in a way that it is achievable. You cannot ask a person to travel to America in 1 day and then make the presentation, come in front of everybody, and then make sales also besides, and then do 20,000 tasks, and then you will be performing his evaluation. It's not fair, obviously. A person who is traveling to America is going to take a day by itself, then there is going to be jet lag, and then he's going to come back. His mind should be stable, and then he will start performing. So if a target for that person who is traveling, coming back, and then you need some kind of a feedback on that, at least 2 to 3 days time should be there.
So that's achievable. Do not ask a person to go to moon and then come back overnight and give you the result. It has to be achievable, practical. Relevant should be relevant to that subject, relevant to his job description on which he is trained. If there is a new thing you have introduced in the organization, then make sure that you have given that training to that person and then ask him. You can't just keep asking things without giving any kind of a training or introduction about that thing which is new to the system. It can be even a new product. You have launched a new product and you are asking multiple questions and multiple results without letting the person know that what is the budget, what kind of an outcome are you expecting from him. So it's wrong. So goals should be smart. Stretch goals, it's okay to stretch a goal, but gradually. Day one, okay, fine, we'll work on it for 2 hours. Then you show me the results next day. Next day, okay, fine, let's add one more topic to it and we will see how it's gonna work. Day 4, day 3, day 5, keep stretching the goals little day by day with guidance, with training, so that the person who is willing to do the work is able to perform. Do not overload the persons that he runs with. Performance indicators, then key matrices to assess progress. There are key indicators through which you can assess that how well the person is performing, and you know the types. 360-degree evaluation. If one a colleague is saying, no, he's not good, and two are saying he is excellent. So you have to understand by meeting the person by yourself that what kind of a feedback it is. Yes, and if directly the CEO, with him, there is a feedback of the same profile about some project that he is not well, you can say, versed with that job role. So it is automatically very clear that you and 2 other team members were not the only one to identify the gap in that person's job role. It is accepted by 3 to 4 people. So be careful on that. And then assign that person guidelines, training, but then comes the attitude also. Do not forget that. If a person has got a willing attitude, only then his performance will be the way you are looking forward to have, based on the company's culture, vision, and mission. Culture is what? How people normally behave and act in that organization. Is it a respectful way? Is it very engaging? People care for each other. So in that case, it is different then, right? तो यहाँ पर जो हमने सारी बात की है गोल सेटिंग टेक्निक्स की, उसमें हमने एक बात जो एम्फसाइज की वो ये थी कि गोल्स स्मार्ट होने चाहिए. स्मार्ट गोल्स कौन से होते हैं? जो कि रियलिस्टिक होते हैं, आप वाकई वो चीज कर सकते हैं. अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ही आप एक बंदे को चांद पे भेज दें और शाम तक वो वापस आके आपको चांद के बारे में सारी मालूमात दे दे, तो फिर आप ठीक तो नहीं कर रहे उसके साथ. वो चांद पे पहुंचेगा कैसे एक दिन में? ये भी तो सोचे. और वहां से फिर रिजल्ट भी बेचारे ने लाना है, फिर उसने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनानी है आपके लिए, वो भी आपको देनी है जिसमें आपने सारी फिगर्स भी हो, और फिर उसकी बात में बोलने में फुल फ्लैश तरीके का मोटिवेशन भी होना चाहिए, फुल फॉर्म में भी बात करे. तो वो इंसान है तो रोबोट भी नहीं ऐसे कर सकता, तो ये तो फिर आपने कुछ ज्यादा ज्यादती कर दी है ना. तो गोल्स ऐसे हों जो कि स्पेसिफिक हों, टू द पॉइंट हो, आप उसे क्वांटिफाई करें, काउंट कर सकते हो इतने परसेंट, इतना इतना अचीव करना है आपने, रेलिवेंट हो और टाइम बाउंड हो. फिर आप उसे कहें कि ठीक है जी, ये आप 1 हफ्ते में कर लें, ये आप 2 days में अचीव कर लें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव यू आर एम्फसाइजिंग टू दैट पर्सन. गोल्स को फिर स्ट्रेच करें और ग्रेजुअली स्ट्रेच करें. कोई गोल है उसको थोड़ा और स्ट्रेच कर लें और ज्यादा बढ़ा लें, उसको अंदर और 2 एक चीजें और काम दे दें थोड़े थोड़े, लेकिन साथ में गाइडेंस, साथ में उसको फुल सपोर्ट करें, ताकि वो जब 3 महीने के बाद उसकी इवैल्यूएशन और अप्रेजल आप कर रहे हो तो आपको फख्र महसूस हो कि ये मेरी टीम का बंदा है और देखो इसने कितना सीखा. और लोग सीख लेते हैं. इट इज ओनली वी हु इज डिफरेंट. हम कैसे सिखाते हैं ये हमारा हम पे है ना. सीखने के लिए ही कोई भी जॉब करता है. उस दिन भी मैंने शायद ये बात की थी कि कोई भी ऐसा शख्स, मेरा नहीं ख्याल, इस पूरी कायनात पे है जो कि जॉब कर रहा हो और जानबूझकर गलती कर रहा हो. वो गलती नहीं होती, वो थोड़ा सा गैप होता है अंडरस्टैंडिंग. और उसमें अगेन अगर आप इन रूट जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो गैप इस तरीके से आ जाता है कि आप एज ए मैनेजर या तो बहुत रूड होते हैं, वो आपके पास पूछने नहीं आता, और या फिर ये होता है कि आप टाइम उसको उतना, वो आपके पास आता ही नहीं, आपको नहीं पता चलता, वो गैप रहता है. इसलिए इट इज अ 2 वे प्रोसेस. हमें अगर गैप्स आते हैं तो हमें रेलिवेंसी में अच्छे तरीके से पूछना चाहिए. ये भी नहीं है कि हर वक्त बस पूछ रहे हैं.
और बस चीज पहले मैं पूछ लूँ फिर काम करूंगा, ऐसा नहीं है। काम हमें करना है, साइड बाय साइड हम एडिशन करते चले जाते हैं। गोल सेटिंग की बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जिनको हम अचीव करते हैं, लाइक देयर आर सो मेनी टारगेट सेटिंग techniques which we normally apply to our real life scenario. Few are termed as OKRs, few are balanced scorecard. Then there is a goal setting theory which actually helps you and guides you to acquire goals which are realistic in that context. तो आप वाकई अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंटेशन है, टाइप्स कौन कौन से हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, क्लियर रिकॉर्ड एवेल्युएशन की जा सकती है जिसके थ्रू फिर इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि उनमें आपके फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, मीटिंग नोट्स आप लेते हैं, फिर परफॉर्मेंस की जो आपकी अप्रेजल है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। रिकॉर्ड ये नहीं है कि जैसे आप जूम पे रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड का मतलब है डॉक्यूमेंट में लिखना, साइन करना, एक्सेप्टेंस लेना। जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे होते हैं ना किसी की, तो आप अपने नोट्स बनाते हैं, उसमें पॉइंट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसी है, फिर जॉब की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, रोल कितना क्लियर क्लियर है, उसको डेफिनेशन आती है कि नहीं। या ये तो नहीं है कि परफॉर्मेंस का ही नहीं पता और आपने एग्जाम रख लिया उसका कि जी हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे इम्तिहान लेंगे आपका, लेकिन उसको आपने यही नहीं डेफिनेशन बताई कि परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। जब परफॉर्मेंस का मतलब ही नहीं है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर पढ़ाने से तो कुछ नहीं आएगा ना किसी को। और वो चैप्टर रियल लाइफ में क्या चैप्टर होगा कि आप उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का उसका हिस्सा बना दें उसको, और उसने दूसरों की भी परफॉर्मेंस करनी है, अपनी परफॉर्मेंस में उसको आइडिया ही नहीं है कि ये क्या चीज है। सो दिस इज समथिंग which is very important. So the documents have to be there, which include feedback forms and meeting notes, performance reviews. Then best practices are those which are successful across the globe. दुनिया भर में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल है। एक्यूरेसी उसमें आती है, टाइमलाइन जो दी जाती है उसके अकॉर्डिंग करें, और कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी होती है इस डॉक्यूमेंट की, क्योंकि ये बिल्कुल किसी की रियल लाइफ है। उसकी अपनी अगर फीडबैक में कोई कमी है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी गैप है जिसमें उसको आपने ट्रेन करना है, उस वाली कमी को आपने कभी भी हाईलाइट नहीं करना। अभी मैंने एक सेशन में बात की थी, 1 मिनट मैनेजर एक बुक है, वो आई गेस मैंने बात की थी बिजनेस इंग्लिश की क्लास में। और सुंदर हमने बिजनेस इंग्लिश में आई गेस बात की थी ना 1 मिनट मैनेजर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम। हाँ यस जी, तो मैम। हम इन्हें भी दे देते हैं आपको। आपको वो एक स्लैक में है। इसमें है, वेरी नाइस। ठीक है, आप स्लैक में काइंडली मैं अगर यहाँ करती पे हूँ। भी, एक्सीलेंट, ओके थैंक ओके। यू सो मच सुंदर, आई एम सो थैंकफुल टू यू बच्चे। आप काइंडली वो वाली बुक जो है ना यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। एक बुक है बड़ी अच्छी, उसका नाम है 1 मिनट मैनेजर। हम आपको ये बुक दे रहे हैं, आपने इसमें से एक टर्म फाइंड करनी है कि वो किस पेज पर है। फाइंड दिस टर्म इन द बुक, और वो पेज नंबर आपने मुझे बताना है। और टर्म है प्रेज इन पब्लिक एंड reprimand इन प्राइवेट। ये टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी की जो अच्छाई है वो आप सारों के सामने बोलें, और अगर थोड़ा सा उसमें कोई गैप आ रहा है, रेप्रिमांड का मतलब होता है कोई कमी है, थोड़ी सी कोई गैप है, ग्रे एरिया है जिसमें उसको फर्दर आपने ट्रेन करना है, तो वो सारा कुछ जो है ना, हाँ जी आयशा, ये मैंने उसमें दिया था बिजनेस इंग्लिश में। तो उसमें जो है वो गैप, जो प्रेज इन पब्लिक एंड रेप्रिमांड इन इन प्राइवेट होता है, वो ये होता है कि अगर कोई कमी है, कोई गैप है, तो वो आप उसको अलग से बता दें। और आपने सेम प्रोसेस जो है ये फॉलो करना होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल में। जब आप बैठते हैं उसके साथ रिव्यूज कंडक्ट करने, तो आप उसको उसके जो ग्रे एरियाज हैं, जहाँ उसने इम्प्रूवमेंट करनी है, जहाँ उसने और आगे बढ़ना है, उन सब चीज़ों को आप डिस्कस कर रहे होते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे आप उसके साथ अकेले बैठ के बात करते हैं, और उनको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन रिव्यू इंटरव्यूज कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना तरीका था, वो हमने इसको जो है करना होता है। मैम सॉरी आपकी आवाज स्लो हो गई है। हाँ जी, वो मैं अभी यही सोच रही थी कि शायद ऐसे ना हो गया। थैंक यू सो मच सुंदर। सुंदर आपने इवन बुक भी आई गेस शेयर कर दी है ना, दैट इज द बेस्ट जी थिंग। जी। को स्लैक में भी मिल जाएगी क्योंकि ये अच्छा गेट। थैंक यू सो मच आयशा फॉर लेटिंग मी नो ऑन दैट, क्योंकि दोनों सेशंस में मोस्टली सेम वो लोग हैं आप लोग, तो इसलिए आई वाज जस्ट सेइंग। और भी मेरे पास ट्रेनिंग्स चल रहे होते हैं, तो खैर इट इज गुड वन दैट यू ऑलरेडी नो दैट द मेन थिंग इज। तो ये जो है हम लोगों का रियल लाइफ सिनेरियो होता है, सिचुएशन जो आप कर रहे हो। अब हमारे पास टाइप्स में डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रिव्यूज होते हैं वो,
एक डॉक्यूमेंट ये होता है, फीडबैक फॉर्म होगा, और गोल सेटिंग टेम्पलेट, जहाँ पे बैठ के आपने रिव्यू किया, और वो रिव्यू किया आपने जैसे ही उसका किसी भी एम्प्लॉय का, आपने उसके साथ बैठे इंटरव्यू में एंड यू डिस्कस्ड एवरीथिंग विद द पर्सन, so you are going to do the goal setting then and there. You are going to identify everything over there only, right? Like you are going to tell that person that, see, this is the gap, and for this, I think let's make a goal that you will be taking up this course, ताकि आपका ये gap वहीं पे fulfill हो जाए. उसी टेम्पलेट पे साथ ही बैठ के, टेम्पलेट डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें ही आप लिखते जाते हैं, ताकि साथ साथ ही ये आपका सारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए. परफॉर्मेंस रिव्यूज में जो डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स हैं वो ये है, परफॉर्मेंस रिव्यूज, फॉर्मल एवेल्युएशन होती है जिसमें, फिर इसके अलावा डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं जो कि आउटलाइन करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स को, फीडबैक फॉर्म, रिकॉर्ड ऑफ इनफॉर्मल फीडबैक सेशन, एंड देन मिनट्स ऑफ द मीटिंग. मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपको बताऊं मैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें बाद में जाके, जैसे लेट सपोज अभी हमने डिस्कशन टॉपिक में आइडेंटिफाई किया 1 मिनट मैनेजर की बात हो रही है, हमने ये चैप्टर में देखा कि जी उसके अंदर ये पेज पर है, तो मैंने अपने मिनट्स में कहीं लिख लिया, मे बी 6 महीने के बाद मुझे ख्याल आता है कि अच्छा, एक बहुत अच्छी हमारी पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने इसके बारे में बड़ा अच्छा फीडबैक दिया था, आई विल गो टू माय मिनट्स एंड विल फाइंड आउट द डिटेल्स फ्रॉम देयर कि अच्छा ये हमने इस डेट को, अब वो इस डेट में अटेंडेंस की, पार्टिसिपेशन की, सब लोगों ने जो है. I'm sorry, you're not audible. अच्छा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी हमारी, वो हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग में हमने उसको पॉइंट आउट किया हुआ होगा, तो वी वुड बी एबल टू टेक आउट द डिटेल्स फ्रॉम देयर. ठीक है जी, ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस. अब कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग्स, उस क्यों हमें मीटिंग्स इफेक्टिव करनी चाहिए, उसमें क्या जरूरी है कि क्लैरिफाई करें आउटलाइन एंड पर्पस ऑफ द मीटिंग. सबसे पहले, मीटिंग कौन सी हो रही है, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है. वो लोग जिनको आपने इवेल्युएट करना है उनसे आप एक पहले मीटिंग करेंगे, आउटलाइन करेंगे, बताएंगे पर्पस क्या है मीटिंग का, एजेंडा भेजेंगे उन लोगों को थ्रू ईमेल, बताएंगे जी आपकी ये मीटिंग होनी है, और आप उसके बाद कहेंगे कि आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी करना है. सो बेसिकली कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. You will define the objectives, clearly outline the purpose, prepare a structured agenda to guide discussions, and foster an inclusive environment for all attendees. जनरल जब आप एक मीटिंग करेंगे तो सबको लेके बताएंगे प्रोसेस के, जी हम मैनेजमेंट, हमारी जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है, तो आपकी परफॉर्मेंस के बाद जाहिर है आउटकम में आपकी प्रमोशन भी होगी, और आपका इंसेंटिव बढ़ जाएगा, सैलरी रेज होगी आपको, और आपके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आपका करियर पाथिंग भी बहुत हो जाएगी. तो ये वाली मीटिंग्स हम इस डेट से इस डेट को स्टार्ट कर रहे हैं, और हम आप सबसे कहेंगे कि आप सारे लोग जो हैं इसको आके अटेंड करें. तो ये अनाउंसमेंट हो जाएगी आपकी सबसे पहले. अनाउंसमेंट के लिए जो मीटिंग होगी उसमें सबको आना है. फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आप इसको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं, तो आप अपनी मीटिंग की प्रिपरेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, मटेरियल गैदर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एजेंडा क्लियरली आप लिखें, स्ट्रक्चर्ड एजेंडा आपने रखना है अपने सामने कि क्या क्या बात करनी है, और उसके बाद जो है आप अपनी मीटिंग जो है वो पर्पसफुली अपनी जो है टीम के साथ उस मीटिंग को लेके चलें. ठीक है जी. अब यहाँ पर मैं आपको एक क्लिप दिखाने लगी हूँ, so that you can understand the example of this thing, and it will be helpful. अच्छा जी, डू लेट मी नो व्हेन माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू, ताकि मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सा जो है वीडियो वो शेयर. ओके. So, माद आपने बस चेक करना है कि इसका आवाज वीडियो की आ रही है कि नहीं. um,
अच्छा, by the way, I have already shared all these links in the chat. आपको मैंने chat नहीं, sorry, in this one Slack. और यहाँ वहाँ से जो लोग वहाँ से लेते हैं वहाँ से, अदरवाइज इसको आप ना कर सकते हैं, मैं यहाँ पे भी आपको शेयर। और जो YouTube पे और Slack पर अगर हैं तो वहाँ आ जाए, नहीं तो Slack के लिए अपनी आईडी शेयर, अपनी ईमेल दे दें ताकि आपको Slack पे ऐड कर दिया जाए। Let me share the sound, I guess. शायद sound अपनी शेयर हो। Screen is shared? Yes, ma'am. Okay. आवाज बताइएगा। आवाज आ रही है? वीडियो No, my voice is not audible. ओहो, ये क्या हो गया है? Let me check. इसका आइडेंटिफाई हो गया। Now tell me, please. The 4 stages of performance Yes. management. You can hear the sound of the video? Yes, ma'am. चलें, great. अच्छा, इसको आपने और से सुनना भी है, समझना है थोड़ा सा, और फिर हम इसके बाद 2 वीडियोस में आपके साथ क्लिप्स हैं इतने ही छोटे छोटे से, वो हम उसको देखते हैं, फिर इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे लास्ट 2 मिनट्स के। The 4 stages of performance management cycle. In order to optimize employee performance and achieve organizational success, it is crucial to have a performance management cycle in place. This cycle consists of 4 key stages: planning, monitoring, developing and reviewing, and rating and rewards. By aligning employee goals with those of the organization, the cycle aims to create a strong relationship, keep employees engaged, reduce turnover, and detect and fix problems faster. Discover the power of effective performance management. Visit Engagedly.com to learn more. Strong relationship. Keep employees अच्छा, it was stopped again. engaged, reduce turnover, and detect and fix problems faster. Discover the power of effective performance management. Visit Engagedly.com to learn more. Let me just share the screen. Another one. अच्छा, ये 4 stages की बात हो रही थी। यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा, और एक इसमें भी ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए भेज दिया, but this will also help you understand. Weekly reviews and manage your employees' performance in those. इसकी आवाज आ रही थी हमारी? Yes, ma'am. अच्छा, thank you. Honestly, I don't believe in quarterly performance reviews. You should have bi-weeklies or weekly reviews and manage your employees' performance in those bi-weeklies. But I can well imagine that these quarterly performance reviews are basically forced on you by your company. Thus, in this video, I will help you make the best out of them by providing you with the perfect template for quarterly one-on-one performance review meetings, including 7 tips on how to facilitate your session like a real pro. All right, let's start with the template. And yes, of course, you can also download this if you want. So the first question is a warm-up question. How was your last quarter in your view on a scale from 1 to 10? So I do like to ask for numbers because then you'll be better able to compare trends over time of the mood of your employee. And this is the moment where I have to recommend the Ecometer software for one-on-one meetings because it helps you to do this in a very structured way. So let's say this is the question, looking at the last weeks, I'm satisfied with my job. And then the employee can give a reply from 1 to 7 in this case here. And now if I click on history, I can even see this mood trend over time of this employee, plus some context if I wrote down notes, which is really, really handy. And of course, if I want to, I can even get some
fancy dashboards that help me to visualize the whole team if I want to. Okay, let's get back to our template. The first basically big part would be that you talk about the successes, about positive things with your employee, which leads me to the first tip. You should try to lead by asking questions. I mean, yes, you could say your performance is bad, but it is so much smarter to ask, how are you feeling about your performance? This triggers self-reflection and even makes the conversation easier for you. So which questions should you ask? Let's have a look. The first question is, what were your biggest successes in the last quarter? As I said, it makes sense to start with a positive vibe here. Then the next question is, looking at your goals, where are you at the moment? And I added a little hashtag here, KPIs, which leads me to my next tip. You should try to talk about actual data. Let your employee go into the project management software tool and check what they actually worked on. And you can obviously do the same if you want. In case you have metrics and KPIs, definitely take them into account. I mean, after double checking that they have something to do with your employee's performance, of course, because looking at data will make your qualitative reflections way more valuable. Okay, and then the next question is another smart trick actually. What did you learn in the last quarter? Which skills did you develop that could help me or the team? This question makes your employee aware of the fact that they actually learned something, and this would be tip number 3, it lets them teach you something. Letting them think about what could even be valuable for you by adding this last part of the question might give them a little confidence boost and shows that you, even as a manager, are still learning. The next question is the following. How satisfied are you with your personal development in the last few months? So it really focuses on this part here. All right, the next agenda point is topics of direct report. So the idea here is that you simply give some space to the employee. Whatever they might have a topic, this is the place to talk about it. Okay, let's continue. The next point is challenges and support. Before talking about the challenges, start by explaining your current challenges and things that you're struggling with. Because by signaling even you are not perfect, you're increasing the psychological safety of your employee and thus the chance that they open up about their actual blockers. And then you can ask the actual questions, which would be in this case, what obstacles have you faced? And you can of course rephrase it. So what blockers have you faced, or potentially also where did you waste your energy? And then the question, are there any resources or support that you need, which might directly lead to some action items here? And the next agenda point is development and goals, which leads me to my next tip. Especially if the performance of your employee is medium or rather bad, focus on the future. Let the past behind, because every new quarter is a new opportunity and you shouldn't focus on the past with your questions. Rather ask the following questions. First one is, are there any new skills you'd like to develop? Next question, how do your priorities align with the team's tasks? This could also be, how do they align with the company vision, for example, so you can really zoom out here. Next question, what are your core goals for the next quarter? And how can I help you move towards your career goals? Once again, at the end, really focusing on action items that you could potentially put down here. The last big agenda point is really focusing on feedback once again. I mean, I suppose this is the most obvious thing, but before the meeting, you have to collect the topics that you want to give as feedback. And once your employee reflects on them with your questions, you can bring them up. And in case you are not able to bring up the feedbacks you have until this point, this is your reminder to bring them up. So, as I said, simple reminder, things we didn't talk about, you can talk about them here. And then, of course, what can I do better to lead you and or the team, which leads me to my next tip. Yes, you as a manager should set a good example and ask for feedback, obviously. Remember, you are not perfect too, and you should signal this to your employee. Okay, let's come to the last part, which is the closing. Let's summarize the task we wrote down from this meeting. This is my tip number 7. Write down the things that you want to follow up on next time and share them with the employee. And for the overperformers out there, in the one-on-one meeting software Ecometer, you will get an auto AI summary of your meeting, which looks like this. And you can then add the automatically created tasks to the task board here on the right to have a great overview. I definitely recommend to have a look at our one-on-one meeting software. It will make it way easier for you to optimize the performance of your team members. There's a link to the software right below this video, and there's also a link to the template that. So this was something which I wanted to share from the perspective of the actual template, that how they sit with it and what actually happens. अच्छा, अब इसी के बेस पर एक और छोटा सा रिव्यू आपको शेयर करती हूँ एक्चुअली हाउ इट इज हैपनिंग। देखिए, रिव्यू मीटिंग्स जब कर रहे होते हैं तो ये लोग किस तरीके से उसको रहते हैं, ये थोड़ा सा एक then we will be, these all will be there for you for the reference.
Let's take a look. On my way to Peter's review, I sent him the document 2 weeks ago and asked him to reflect on his overall year. I'm just on my way to Peter's review. I sent him the document 2 weeks ago and asked him to reflect on his overall year, plus look at each of the objectives we agreed at the start of the year. I've got my notes on the same, plus I've had a quick look at the file I keep for Peter. This is where I keep my notes on the quarterly one-to-one meetings we've had together this year. I like to keep monthly catch-ups separate, as this is more about the day-to-day work. I've got a couple of difficult messages to get across, but this shouldn't come as a surprise because we've discussed them before. And I've rehearsed them, and I've got them down to something that I feel sounds fair and crystal clear. I just must remember to pause and let Peter respond. I do have a tendency to keep talking. I'm just off to my annual performance review meeting. It's a bit nerve-wracking, but I've done my prep. I've got my objectives and examples and evidence for each one. If I'm honest, there's probably a couple of areas I haven't hit 100%, and I really don't want to let her down. But the one thing I can be confident of is we'll have a full and thorough meeting. I mean, some managers pay lip service to all that, but ever since I've worked for Angie, she's made it a priority to spend proper time with me. So this is actually one of the example that how it goes. One more good example is here, which I have already shared with you in the team that share also, but just have a little look on it. It was about 6:30 in the morning when Jennifer wearily collapsed into a chair at the nurse's station. She frowned when she looked at the clock and remembered that she had her annual performance evaluation today. Instead of going home to sleep, she now had to kill more than 2 hours waiting for the meeting with her supervisor. Completely worthless, Jennifer muttered under her breath. She dozed at the nurse's station before meeting with her supervisor. Before her manager even started, Jennifer was completely disengaged. She was tired, hungry, and a bit frustrated by her earlier dealings with a rude physician. At that moment, there was little that Jennifer could care less about than her performance appraisal. Conducting performance evaluations does not come naturally for all managers. This is particularly true for managers who are adjusting to their role for the first time or are managing employees that previously were coworkers. However, even if a candid discussion about performance doesn't come naturally, there are tricks of the trade that will help transform a performance appraisal from an uncomfortable necessity into a candid and meaningful discussion. A manager performs an appraisal with one ultimate goal in mind, giving people meaningful feedback so that the relationship between the employer and the employee can become even more mutually beneficial and productive. In the case of the nurse named Jennifer, the manager missed a key opportunity to start the evaluation well by scheduling Jennifer for a performance evaluation when she was exhausted from 3 consecutive shifts of 12 hours each. In fact, not only was Jennifer scheduled during hours she would normally be sleeping, but the manager also made her wait more than 2 hours past the end of the shift. Managers with direct reports who are shift workers will find that the best performance evaluations occur when neither party is exhausted or pressed for time. Both parties should be impeccable with their punctuality, and neither party should be made to wait for the other. Phone calls, emails, and other employees should be made to wait until the performance appraisal has done. So this was a little bit about what we have discussed so far on performance management, one aspect. तो आपको इसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग लगता है काफी क्लियरली अब होगी, बिकॉज ये प्रोसेस जैसे मैं आपसे पहले भी बता रही थी उस दिन कि ये जो हम इसको डिस्कस करते हैं एट लेंथ, उसका पर्पस यही है कि इवन इट एनी डिपार्टमेंट वेयर यू आर वर्किंग इन एचआर, सो यू कैन इवन बी स्टैंड अलोन टेकिंग अप दिस रोल, जो कि आजकल के सिनेरियो में ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल को प्रॉपर तरीके से रन करना. एंड आई एम सो हैप्पी कि माशाल्लाह से जो आपका इसमें रिस्पॉन्स आ रहा होता है, द वे यू आर
आंसरिंग द क्वेश्चंस, तो अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी आपकी होती है। ठीक है जी, तो आज हम इसको यहीं तक रखेंगे रेडीनेस तक के लिए, और इसके बाद जो हमने नेक्स्ट डिस्कशन करनी है अपने सेशन में, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीटिंग फैसिलिटेशन स्किल्स, कि आपने वो मीटिंग एक्चुअली कंडक्ट किस तरह करनी होती है। आपको एग्जांपल्स मैंने जैसे बताया कि आपके टास्क जो वर्क प्लेस है उसमें भी मैंने शेयर कर दी है, साथ साथ लिंक्स भी वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, सो दैट वंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। ठीक है जी, अभी कोई क्वेश्चंस हैं अगर कोई तो जल्दी से बताइए, वी कैन इवन हियर टू दैट। तो वरना उसके बाद ये है कि हम इसको वाइंड अप करते हैं आज। ठीक है जी, समझ में आ गया। ओ वाह, अदनान ने लिखा हुआ है प्रेज इन पब्लिक, और इसका मीनिंग भी। जी, एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम लिशा। मैम वो जो आपने हमें 1 मिनट मैनेजर दी थी बुक, मैंने उसको रीड किया था, लेकिन जो आपने एग्जैक्ट हमें टू द पॉइंट लाइन ढूंढने के लिए बोली थी वो उसमें नहीं थी। मीन प्रेज के टॉपिक अलग थे और एप्लीमेंट्स के टॉपिक अलग थे, मीन अलग अलग चैप्टर्स थे, तो ये जो एग्जैक्ट लाइन आपने दी थी वो नहीं थी। मैंने बहुत ज्यादा केयरफुली रीड की थी, लेकिन ये नहीं थी लैंग्वेज में। आपकी लास्ट में लिशा बिल्कुल आवाज मुझे नहीं सुनाई दी, मेरी तरफ ही नेटवर्क का वो है। लास्ट आपने क्या वर्ड बोला है? जी मैम अलिशा ये कह रही हैं कि वो उसमें एक जगह पे फ्रेज कंप्लीट नहीं था, बल्कि अलग अलग जगहों पे था। वो कह रही हैं कि उन्होंने कम्प्लीटली रीड किया है, और मेरा भी ये ओपिनियन था कि मैंने भी उसको कम्प्लीटली रीड किया है, तो मुझे भी वो रेफरेंट में उसका मिले हैं वो फ्रेजेस, लेकिन अलग अलग पैराग्राफ्स में। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दैट इज देयर बिकॉज उसकी रीजन है ना अलिशा, इसीलिए मैंने ये आप लोगों को दिया भी है, बिकॉज इसकी वर्थ है, इसकी बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस है। इसीलिए जिसे कहते हैं ना कि दैट्स व्हाट इज पार्ट ऑफ इट, इन टर्म्स ऑफ कि हमें ये समझ होनी चाहिए इसकी, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, बहुत सी आपने। ठीक है जी, चलें, गुड वन, वेल पिक्ड। कोई मसला नहीं, इट्स ओके, वी ऑल आर टीम। हम सब ने अच्छा एक दूसरे के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी रखी है, तो बस बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन इस बुक को हमने अपना रीडिंग असाइनमेंट भी रखना है और साथ में करना है। चलें, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट वी ऑल आर रियली कंट्रीब्यूटिंग टू इट। और मेरे हमारे जो यूट्यूब के बहुत अच्छे से लिसनर्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाया करें, इसी तरह जैसे आज आप लोग ने ज्वाइन कर लिया था। ये असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विच विल हेल्प यू इन दी लॉन्ग वे। Thank you very much, everyone. Thank you, Sundar Samad and Haris, for a nice start of the session always. अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू। Thank you, ma'am. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. अल्लाह हाफिज।